गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज वापस से आपके लिए लेके आया हूँ चैप्टर नंबर सेकंड स्टैंडर्ड 11 एंड सब्जेक्ट है हमारा गुजराती। आज हम बात करेंगे क्वेश्चन आंसर्स, ग्रामर एंड ये समझेंगे कि अगर क्वेश्चन आंसर सही तरीके से लिखा जाए, ग्रामर को सही तरह से लर्न किया जाए तो चैप्टर से ज्यादा जरूरी है क्वेश्चन आंसर लर्न करना एंड उसके अंदर अच्छा स्कोर तभी हो सकता है जब आप स्पेलिंग पे यानी कि जोड़नी के ऊपर खास ध्यान रखें। तो शुरू करते हैं चैप्टर नंबर सेकंड जिसका नाम है खरी माँ, विषय गुजराती और इसका साहित्य प्रकार रहेगा दैट इज नवलिका या इसको आप टूकी वार्ता भी कह सकते हो। तो सबसे पहले लेते हैं शॉर्ट आंसर्स। याद रखिए बच्चों के जब भी आप शॉर्ट आंसर्स लिखे उसमें जो मेन वर्ड होता है उसकी स्पेलिंग मिस्टेक कभी ना करें। क्वेश्चन जो है वो ज्यादातर क्वेश्चन के अंदर का ही सारा का सारा लिखना होता है, बस एक दो या कभी कभी एक लाइन आपको एक्स्ट्रा लिखनी होती है एंड वो जब आप लिखो तो उसके नीचे पेंसिल से जरूर अंडरलाइन करिए ताकि वो आपका आंसर हाईलाइट हो सके एंड चेकर को कोई भी प्रकार की मिस्टेक्स आपकी ढूंढ ना मिले। तो लिखा यहाँ पर कि नवी स्त्री घરમાં જોયા પછી કુસુમાયુધે તેને પ્રથમ શો પ્રશ્ન પૂછ્યો। तो राइट आंसर सिंपल है, तमे અહીં રહેશો કે જતા રહેશો, इतना ही आपको लिखना होता है। बाकी सब देखो मैंने कॉपी ही किया है। अब तमे અહીં રહેશો કે જતા રહેશो उसके नीचे अगर पेंसिल से अंडरलाइन है तो बहुत ही इजीली अपने आंसर ढूंढ पाएंगे एंड आपको फुल मार्क्स मिल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नवी स्त्री ने कुसुमायुध शू संबोधन करे छे। तो नवी स्त्रीने कुसुमायुध तमे एम कहीने संबोधन करे छे। आ पाठमां भाड़ूती शब्द कोना माटे वपरायो छे? तो दो व्यक्ति के लिए वपराया है, एक है नौकरबाई और दूसरा है डॉक्टर माटे। बीमार कुसुमायुधनु क्यों वाक्य नवी मानु हृदय चीरी नाखे छे? जब कुसुमायुध बीमार होता है उस टाइम जब वो प्रश्न पूछता है कि हूँ मारी खरी माने बोलावू छू, ये जो प्रश्न या ये जो सेंटेंस बोलता है कुसुमायुध उस वक्त उसकी माँ को सही में बहुत बुरा लगता है। सो यहाँ पर एक रूढ़ि प्रयोग भी इस्तेमाल हुआ है दैट इज हृदय चीरी नाखવું यानी खूब જ દુઃખ થવું, દર્દ થવું। નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન है कुसुमायुध ने एनी खरी मां કેટલા વર્ષનો મૂકીને મરી ગઈ? सिंपल आंसर है दैट इज 4 वर्ष। ठीक है। नेक्स्ट है मां સરખું લુગડું પહેરેલી સ્ત્રીને कुसुमायुध કેવી રીતે જોતો હતો? तो हमेशा धारी धारी ने यानी ध्यान से देखने को कहते हैं, धारी धारी ने जोतो હતો। सूता पहला कुसुमायुध स्त्री ने शू पूछे छे? तो पूछता है जब उसके घर के अंदर वो स्त्री घर में एंट्री करती है उस दिन उसको पूछा जाता है प्रश्न कि तमे मारा सगा थाओ के नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नवी युवतीए तमे शा सगा थाओ एम कुसुमायुधे पूछू त्यारे युवतीए शो जवाब आपे छे? तो उसका जवाब देता है कि हूँ तारी माँ थाओ और फिर आगे चलकर वो अपने आप को बहन बोलती है। ये भी आप इसके अंदर लिख सकते हो। कुसुमायुधे केम मरवा माटे तैयार थाय छे? क्योंकि उसने सुना था कि उसकी मां मर गई है, इसलिए यहाँ पर लिखा है कि मां मरी जवाय तो मां ने मरी शकाय, ए बात थी ये मरवा माटे पर तैयार थाय छे। तो आप इसको पेंसिल से अंडरलाइन जरूर करिएगा। अब बात करेंगे हम टू लाइन आंसर के लिए। टू लाइन आंसर जब भी हम लिखेंगे तो आप राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड के अंदर 3 डैश करेंगे। पहला डैश रहेगा चैप्टर का नाम लिख देंगे दैट इज खरी मां, फिर लेखक का नाम लिखना है और उसके नीचे साहित्य प्रकार नवलिका या टूकी वार्ता लिखना है एंड देन आप आंसर पॉइंट वाइज आप लिख सकते हो, पर हो सके तो आप लाइन वाइज लिखो, ज्यादा अच्छा रहेगा। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके सामने। मानी गैरहाजरी विषे कुसुमायुधने नानपणमां केवा केवा जवाबो मळता हता? तो बहुत सारे आंसर मिलते थे। कोई इसको कहता है ये तो प्रभुना धाममां गई, कोई कहतो तू मामाने घरे गई, कोई कहतो तू नहीं नहीं ये तो यात्रा करवा गई छे, तो नौकरे तो कही दीधु तारी मां मरी गई छे। तो इस तरह से उसको आंसर मिलता था जब उसकी माँ का देहांत हो जाता था। वैसे बच्चों को डायरेक्टली ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि माँ की देहांत हो गया, अवसान हो गया है, पर नौकर जो थोड़ा मूडी किस्म का था उसने शायद ऐसा जवाब दिया था। नेक्स्ट है कुसुमायुध मानी શોધખોળ કેવી રીતે કરતો હતો? તો એકાએક સુંદર મુખવાળી કોઈ સ્ત્રી ઘરમાં દેખાય ત્યારે कुसुमायुध माना मुख तेनी साथे हमेशा ज्वाइन करतो या देखता था या इमेजिनेशन करता था। कोई देखावड़ी स्त्री जोया करवा मतो मां सरखू लुगड़ू यानी कपड़ू पहर्યું હોય એવી સ્ત્રીને હંમેશા એ ધારી ધારીને હંમેશા ध्यान से देखता था। એવી કોઈ સ્ત્રી મળવા આવી હોય તેને ઘરમાં રહેવા માટે બાર બાર આગ્રહ કરતા था यानी आग्रह करतो હતો। માની નજરનો ભૂખ્યો બાળક આમ તેની સમજ પ્રમાણે માની શોધખોળ કર્યા કરતો હતો।
मोस्ट इंपोर्टेंट स्टूडेंट, आप याद रखिए, मैं हिंदी में काफी सारे वर्ड इस्तेमाल करता हूँ या एक्सप्लेन कर रहा हूँ, उसका एक ही रीजन रहता है हमारा, बिकॉज ऑफ दिस गुजराती इज अ सेकंड लैंग्वेज एंड काफी सारे लोगों को समझने में प्रॉब्लम्स होते हैं। वही कारण है कि मैं हिंदी में आपसे बात कर रहा हूँ। बाकी मैं गुजराती बहुत अच्छी तरह से बोलता भी हूँ एंड आपको समझा भी सकता हूँ, पर ये हमारा मकसद रहता है कि आप अच्छी तरह से समझो, है ना। सो प्लीज, जो भी व्यूअर्स को ऐसा लगता है कि सर आप हिंदी में बोल रहे हो, तो जहां पर जो वर्ड है वो गुजराती में होगा, वो गुजराती में ही बोलूंगा। एंड आपको जो भी ये क्वेश्चंस है, प्लीज आप मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताएगा। नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे 2 लाइन आंसर के अंदर। नवी मां कुसुमयुद्ध ने केवी रीते भलामणो करती? तो नवी मां कुसुमयुद्ध ने 7 વાગે ઉઠી જવાનું, 7 વાગ્યા પછી ઊંઘ્યું નહીં રહેવાનું, 2 કરતા વધારે રોટલી નહીં ખાવાની, બહુ દોડાય નહીં, ચીસ પાડીને નહીં બોલવાનું, વैसे ભલામણ કરતી थी, यानी कि रिक्वेस्ट करती थी। नवी माए પોતાને જ ખરી માં બનવાનું શું કર્યું? તો નવી માને बहुत सारे कोशिश की थी, बहुत सारे प्रयत्न किए थे કે બાળકના મુખ પર પહેલું ચુંબન લઈ હંમેશા માતૃત્વના હૃદયની અંદર कुओं खोदवानु कार्य हमेशा वो करती रहती थी। एंड बच्चे के लिए उसने बहुत सारे कार्य किए थे। लाइक हमेशा वो ये ध्यान में रखती थी कि क्या क्या उसको खाना है, पीना है, रहना है, ये सारी चीजें हमेशा वो ध्यान में रखती थी। ये बात आपको ध्यान से लिखनी है। नवी मां ने संभाळती कुसुमायुद्ध क्या क्या परिवर्तन આવ્યા? तो जिसमें આકાશમાં ઉડતું या કિલ્લોલ કરતું પક્ષી એકાએક આજ્ઞાધારી વિમાન બની જાય તેવી સ્થિતિ હતી। એના અનુભવની સ્થિતિમાં कुसुमायुद्धની अंदर ऐसा ही हुआ था। लाइक स्वच्छ कपड़ा वो पहनता था, गति के अंदर, मतलब पहले भागता था, दौड़ता था, पर હવે ગતિમાં સ્થિરતા આવી હતી। प्रश्न परंपरानी अंदर डाहपण, यानी कैसे प्रश्न पूछने चाहिए, वो भी उसके अंदर थोड़ी दिमाग आ गया था। आखो दिवस जो पग वाले, मतलब शांति से बैठता नहीं था, धांधल धमाल करने वाला बच्चा अब शांति से बैठता था। इवन निशाળે જવાની પણ હા પાડતો હતો। આમ નવી માએ પોતાને ખરી માં બનાવવા માટે क्या क्या कोशिश की, तो आप इसमें ये भी आंसर लिख सकते हो। एंड अगर देखने जाए तो लास्ट एंडिंग पार्ट ये भी है, तो काफी सारे लोग ये आंसर लिखवाते हैं एंड काफी सारे लोग ये भी लिखवाते हैं। सो प्लीज, आपको जो भी अपने स्कूल के टीचर बोले उसको फॉलो करिएगा, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि यहाँ पर आंसर आपने जो बोला वो नहीं बोला है, तो मेरा यही रीजन था, तो आप समझ सकते हो। नेक्स्ट आंसर है यहाँ पर लॉन्ग आंसर। लॉन्ग आंसर बच्चों हमेशा 3 पार्ट में डिवाइड करिएगा। फर्स्ट इज द इंट्रोडक्शन पार्ट, सेकंड मेन आंसर जो आपके सामने दिख रहा है दैट इज 11 पॉइंट वाला, एंड देन ये जो येलो वाली लाइन में लिखा हुआ है दैट इज क्वेश्चन को रिपीट करना। ठीक है, तो हमेशा इंट्रोडक्शन पार्ट लिखिएगा। हमेशा मैं आपको सिखाता हूँ इंट्रोडक्शन कैसे लिखा जाता है। तो यहाँ पर हम आंसर को आपको सिखाते हैं। खरी मां नवलिकाમાં બાળકની માં મૃત્યુ પામે છે, તે સમયે બાળકના પિતા નવી માં લઈ આવે છે, પરંતુ ખરી માં મૃત્યુ પામ્યા પછી બાળક સતત માતાની શોધમાં હોય છે। બાળક અનેક પ્રશ્નોત્તરી કરી માતાની શોધ કર્યા કરે છે। માં કેમ આવતી નથી, માં મને કેમ ન લઈ જઈ શકે, એવા અનેક પ્રશ્નો કર્યા કરતો હતો। એ જ અરસામાં એ સમયમાં બાળકના પિતા નવી માં લઈ આવે છે। નવી માને સંપૂર્ણ ખબર છે કે એક બાળકનો ઉછેર કરવાનો છે। સંપૂર્ણ જવાબદારી સાથે, સંપૂર્ણ સમજ સાથે નવી માં તેને પરણી અને આવે છે। બાળકને નવીમાં હંમેશા તમે એમ બહુવચનનું અથવા માનવાચક શબ્દથી બોલાવે છે। માં શબ્દ એને વધારે પડતો લાગે છે, આથી એ નાની ઉંમરમાં કોઈ માં બનવા માટે એ સ્ત્રી તૈયાર થતી નથી, કારણ કે એને લાગે છે કે હા હું માં બનીને આવી છું, પરંતુ હજી તેને માતાનો અનુભવ નહોતો। બાળક કહે છે મારી માં તો મને તું કહીને બોલાવતી, તમે મને તું કહીને કેમ નથી કહેતા? ત્યારે આવા અનેક પ્રશ્નો બાળક કરે તો ખરા અર્થમાં નવી માની એ સમયે કસોટી થાય છે, અને આમ ખરી માં બનવા માટે બાળકની પ્રશ્નોત્તરી નવી માને મજબૂર કરી દે છે। આ રીતે ऐसे कॉमा करना है और फिर बोलना आ प्रमाणे आ रीते बाळकनी बुद्धि मोटाने तारवे छे। आ विधानનું सार्थक અહીં देखाय छे। इस तरह से जब भी आप करो तो 2 पैराग्राफ के बीच में एक लाइन छोड़िएगा, बहुत ही खूबसूरत आपका लुक आएगा लॉन्ग आंसर लिखने का। ठीक है, नाउ सेकंड लॉन्ग आंसर है खरी मां शीर्षकની યથાર્થતાની ચર્ચા કરો। તો ખરી માં એ રમણભાઈ વસંતભાઈ દેસાઈની એક વાર્તા છે। આ વાર્તાનું કથા વસ્તુમાં માં એક કેન્દ્રમાં રાખીને પસંદ કરવામાં આવ્યું છે। બાળક 4 વર્ષનું હોય ત્યારે એની માં મૃત્યુ પામે છે। બાળક સહજ રીતે બાળક માની શોધ કરે છે અને માં હજુ સુધી કેમ
આવતી નથી, માં મને કેમ લઈ ગઈ નહીં, એવા અનેક પ્રશ્નો કરતો હતો. મને મૂકીને કેમ જતી રહે, આવા અનેક પ્રશ્નો થાય ત્યારે માને શોધ્યા કરે. એ સમયે બાળકના પિતા નવી માં લઈ આવે છે. નવી માં બાળકના મનને શાંત કરવા માટે અનેક પ્રયત્નો કરે છે. માની ખોટ પૂરી કરવા માટે બધા પ્રયત્નો થાય છે. ખાવા, પીવા, બેસવા, ઉઠવા, નાહવા, ધોવાથી માંડી કપડા લત્તા સુધીનું બધું જ એ ધ્યાન રાખે છે. ઇવન જીવનશૈલીની અંદર પરિવર્તન લાવવાનો પણ પ્રયત્ન કરે છે. આમ નવી માં ખરી માની ખોટ પૂરી કરવાની પૂરી શક્યતા, પૂરી ધ્યાનથી એ કાર્ય કરી રહી છે. બાળકને નવી માં તમે કહીને બોલાવે છે ત્યારે બાળક પ્રશ્ન કરે છે કે તમે મારી માં છો તો તમે મને તું કહીને કેમ નથી બોલાવતા? તમે તો મને તું નથી કહેતા. એ અરસામાં બાળક બીમાર પડી જાય છે. દવા કરવામાં આવે છે છતાં બાળક સારું થતું નથી, કારણ કે બાળકને ખરી માની હૂંફ મળતી નથી. તે મળતી ન હોવાને કારણે બાળકની સેવા ચાકરી વધી જાય છે. પરંતુ એ જ અરસામાં, એ સમયમાં બાળક એક સમય ઊંઘમાંથી જાગી અને માં એવા શબ્દો બોલે છે. હું મારી માને શોધું છું, એમ જ્યારે નવી માને કહે છે ત્યારે માતા યાની કે નવી માતાને ધ્રાસકો યાની કે શોક लगता है. छता मोटू मन करी અને બાળકને છાતી સરસો ચાપે છે, मतलब उसके साथ लगा लेती है, हक कर लेती है एंड બાળકને ખોળામાં લઈ અને ઊંઘે છે. બાળકને માની હૂંફ મળે છે એટલે બાળકને સારું થવા લાગે છે. નવીમાં ખરા અર્થમાં એ સમયે ખરીમાં બને છે અને ત્યારે બાળકને ખરેખર સારું થઈ જાય છે. આ રીતે એક નવીમાં કઈ રીતે ખરીમાં બને છે એ શીર્ષક ખરેખર આ પાઠ નવલિકા અથવા કહી શકાય કે ટૂંકી વાર્તા માટે રમણલાલ વસંતલાલ દેસાઈએ ખરી રીતે સાર્થક કરી બતાવ્યું છે. લાસ્ટ લોંગ આન્સર ઇઝ નવીમાં શરૂઆતમાં બાળકની કેવી કાળજી લે છે અને અંતે ખરીમાં તેણે શું કર્યું. उसका आंसर है नवी मां બાળકના પિતાને પહેલીવાર પરણીને આવે છે ત્યારે એક બાળકની માં થઈને જવાનું છે એ બાબતનું એને બરાબર જાણ હતી. સંપૂર્ણ સ્વસ્થતા સાથે પરણીને આવી. બાળકના અનેક પ્રશ્નો સામે નવી માને મૂંઝવણ પણ પેદા થાય છે. બાળકના પ્રશ્નોના જવાબ આપવામાં અઘરા થઈ ગયા હતા, પણ છતાં એ બધી પરિસ્થિતિને પહોંચી વળવા માટે મક્કમ ઈરાદો કરે છે. બાળકના પ્રશ્નના જવાબ આપે છે. હું તારી ખરી માં છું એમ કહીને પોતાનું મન મોટું રાખી અને તેને સ્વીકાર પણ કરે છે. બાળકની સાર સંભાળ લેવા માંડે છે. સવાર થતાની સાથે બાળકને ઉઠાડે, માથામાં ધૂપેલ નાખે, વાળ ઓળી આપે, બાળકને નવડાવે, કપડા પહેરાવે, ભૂખ્યા પણ રાખતી નથી. અતિશય ધ્યાનથી ખાવા, પીવા, રહેવા બધામાં ધ્યાન આપે છે. બે રોટલીથી વધારે ન ખવાય, ચીસ પાડીને ન બોલાય. શરૂઆતમાં આ રીતે સંભાળ લેતી એ નવી માએ બાળકની સાચવણી માટે લાગણી સિવાયના બધા જ પ્રયત્નો કર્યા હતા. હા, માતૃત્વની પુસ્તકો વાંચેલી એટલે તેની અંદર હજી માતૃ વાત્સલ્ય દેખાતું નહોતું, એ બાબત અલગ હતી. બાળક બીમારીમાં સપડાઈ જાય છે ત્યારે ડોક્ટર પાસે દવા કરાવવામાં આવે છે તો બાળકને સારું થતું નથી. નવીમાં પોતા મૂકે છે અને એ સમયે આમ લાગે છે કે ખરેખર એ ખરીમાનું જ કાર્ય કરી રહી છે. આમ બાળક ઊંઘે છે, બાળકને છાતી સરસો ચાપે છે, ઊંઘાડે છે, બાળકને હૂંફ આપે છે અને આ રીતે એક નવીમાં ખરેખર એક ખરીમાં જેવું કાર્ય કરી અને આ વાર્તાના શીર્ષકને યથાયોગ્ય કરે છે ત્યારે બાળકને સારું થઈ જાય છે. આ રીતે નવીમાં खरी मां बनी जाए छे. नाउ हम बात करेंगे ग्रामर पार्ट यानी कि समानार्थी शब्द. ये बहुत जरूरी है. नया जो पैटर्न आएगा उसके अंदर समानार्थी शब्द भी पूछने वाले हैं. नानकड़ो नानो आनंद खुशी सारा सरस लाड प्रेम स्वर्गवासी मृत्यु पामना हृदय हयु सतत कायम प्रेम प्रभु ईश्वर धाम निवास आंख नयन क्वचित क्यारेक लुगड़ू यानी कपड़ू थड़कतू यानी कंपतू कंठ यानी गळू स्फूर्ति यानी उत्साह सर्व बधा मनुष्य मानस कावतरू दाव पेच मान्यता विश्वास पिता जनक लवी उठू यानी बोली उठू झड़प उतावળ जबकि एकाएक जागी जવું धारी धारीने ચીવટથી નાસી ભાગી જવું ખાતરી ચોક્કસ હસવું હાસ્ય माथू मस्तक नवाय आश्चर्य अनेक घना बधा. बच्चों एक बात और आपको मैं बताऊं, अगर आपसे लर्निंग नहीं होता इसको ऑफलाइन वीडियो में डालो एंड ये जो हमारे क्वेश्चन आंसर्स है आप बार बार सुनो.
मैं उसमें ऐसा मना तो करने वाला हूँ नहीं कि मैं नहीं बोलने वाला हूँ, बस आपको रिपीट करना, वापस सुनो, रिपीट करना, वापस सुनो, तो आपको बहुत ही ईज़िली इसके क्वेश्चन आंसर लर्न हो जाएँगे। जैसे आप बॉलीवुड, हॉलीवुड सॉन्ग सुनते हो एंड 2 बार, 3 बार, 4 बार सुनने से लर्न होते हैं, उसमें तो बेनिफिट नहीं होता है, पर हाँ, इसमें आपको गारंटेड बेनिफिट होगा अच्छे मार्क्स स्कोर करने में। तो ये ज़रूर करिएगा। आगे है समानार्थी शब्द, कोटे, गळे, बाजी, वळगी, चेष्टा, व्यवहार, हाथ, हस्त, विकट, कठिन, गत, मृत्यु, કબૂલ, સ્વીકાર, ઉત્સાહ, ઉમળકો, પ્રમાણિક, નિષ્ઠા, આદર્યો, કર્યો, ધૂપેલ, માથામાં નાખવાનું તેલ, અણુ અણુ, દરેક ઠેકાણે, અપરમાં, બીજીમાં, શમી જવું, બેસી જવું, તીવ્ર વૃત્તિ, અતિશય, ઈચ્છા, જહેમત, મહેનત, આજ્ઞાધારક, આજ્ઞાપાલક, કલ્લોલતું, આનંદ કરતું, શિખામણ, સલાહ, સંતોષ, આનંદ, હૃદય, હૈયું, કાળજી, દેખરેખ, આંખ, ચક્ષુ, ધીકી, ગરમ થઈ જવું, ઊનું, ગરમ, શુશ્રુષા यानी कि सेवा चाकरी, मातृत्व, मातानो प्रेम, पाताल को, खूब જ ઊંડો કૂવો, एंड सोड यानी खोड़ो। बहुत सारे हमने मीनिंग्स लिए हैं इस चैप्टर के अंदर से और मेरे ख्याल से सारे कवर हो चुके हैं, ठीक है। इसके अलावा आपके लिए ये एक एक्सरसाइज दे रहा हूं, इसके आंसर अगर नहीं मिलते तो जरूर मुझे कमेंट्स कीजिएगा, इसके राइट आंसर आप तक जरूर पहुंचाऊंगा। फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपको भाषा शुद्धि करनी है, इसके अंदर कुछ ना कुछ गलत है, आपको उसको सही करना है। तेनो पिता जबकि थी जागी पढ़तो शरीर में हाथ फेरवतो, तो ये सेंटेंस को सही फॉर्मेशन में आपको उसका उत्तर लिखना है। बैठेगा, कोशिश जरूर करिएगा, मजा आएगा, ये भी एक एक्सरसाइज है। गेम की तरह लोगे तो ये पढ़ाई आपके लिए टफ नहीं होगी, इजी बन जाएगी। सेकंड क्वेश्चन है प्रत्यय यानी कंजक्शन लगाना, नो, नी, नू, ना, ए, ने, मा, थी, ये सारे वर्ड लगाओ। अंदर बाहर आगे पाछड़ ऊपर नीचे वड़े द्वारा थके मार्फत है। ये जो है अनुग एंड नाम योगी वर्ड है, मैंने फास्ट बोल दिया आई थिंक, पर प्लीज आप उसका यूज करिएगा, ये सेंटेंस बहुत इजी बन जाएगा। બાળકના કુસુમાયુથી પિતાની ફરી લગ્ન કરવાનો નિશ્ચય કર્યો, तो कौन सा गलत प्रत्यय है, वहां पर सही प्रत्यय लगाओ। एंड संयोजक का मतलब भी कंजक्शन होता है, ये आपको 12th बोर्ड के लिए बहुत काम आने वाला है। तीनों एक्सरसाइज जरूर करिएगा, फिर मैं इसके आंसर नेक्स्ट आपको सेशन में जरूर दूंगा या कमेंट्स बॉक्स में भी आपको पास ऑन करूंगा। तो नेक्स्ट हमारा जो वीडियो आने वाला है उसका नाम है सुदामा चरित्र, पोयम नंबर 3, 11th गुजराती के लिए एक बहुत ही बेहतरीन स्टोरी है, जिसके अंदर भगवान श्री कृष्ण के बेहतरीन या खास मित्र है जिसका नाम है सुदामा। एंड सुदामा जी का हमें चरित्र समझना चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान की धरती के अंदर अगर फ्रेंडशिप का कोई सही मतलब बता पाया था तो वो थे भगवान श्री कृष्ण एंड सुदामा की मित्रता। तो प्लीज जरूर आप देखेगा, तब तक मुझे आज्ञा दीजिए। आपका दोस्त, आपका मित्र, आपका गुरु महेंद्र जोशी। थैंक यू वेरी मच।